Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaurang Dhawanlal and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। प्रतिदिन की तरह हम कार्यक्रम में लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के नवीनतम समाचार, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार विशाल जी। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं गौरा धवनलाल। Thank you, Vishal, and Deepshika. Welcome to the program. Thank you, Gaurang. A quick look at the headlines. Key domestic markets end with marginal gains. Sensex finishes above 66,100. Nifty ends above 19,700 points. Gold trades at around 58,000 rupees per 10 gram for October contracts at the MCX. And Brent crude prices rise more than 1% to trade at $95.20 per barrel. प्रमुख घरेलू शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 66,100 और निफ्टी 19,700 अंक से ऊपर हुए बंद। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने का अक्टूबर वायदा भाव 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 1% बढ़कर $95.20 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंची। शुरुआत शेयर बाजार से करते हैं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 66,100 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,700 अंक के स्तर से ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स 173 अंक की बढ़त से 0.26% ऊपर 66,119 पर बंद हुआ। निफ्टी 52 अंक की वृद्धि से 0.26% बढ़कर 19,716 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.76% लाभ में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.68% की बढ़त के साथ बंद हुआ। Key domestic share indices today ended with marginal gains. The BSE Sensex finished above 66,100, while the NSE Nifty ended above 19,700 points. Both indices gained marginally amid positive global cues. The Sensex gained 173 points or 0.26% to end at 66,119, while the Nifty added 52 points or 0.26% to settle at 19,716 points. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.76%, while the small-cap index rose 0.68%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 20 companies appreciated, while those of 10 companies declined. Larsen & Toubro gained 1.7%, ITC rose 1.5%, and Sun Pharma advanced 1.4%. On the other hand, Titan declined 1.2%, SBI fell 0.8%, and HDFC Bank slipped 0.7%. In sectoral indices at the BSE, 17 sectors gained while 3 logged losses. Capital goods and healthcare, both indices gained 1.1%, followed by the banking sector, which rose 1%. On the other side, the oil and gas sector declined 0.4%, consumer durables fell 0.3%, and the Bankex slipped 0.1%. The overall market breadth was positive as shares of 2,008 companies appreciated and 1,640 companies declined. A total of 151 shares remained unchanged. So, Deepshika, we are seeing the Sensex yesterday, the day before, it was flat. Today, there's a marginal increase and a certain kind of a stability seems to be entering, and we're talking of positive global cues. So, could you share some of them with us, please?
Gaurav, if you've noticed, there has been a lot of nervousness in the markets past, the US Fed's statement, and which was a very hawkish statement than what the markets expected. And we saw this nervousness and all the positive macroeconomic indicators from within the country, and also the earnings from the corporate sector, which have been very, very robust, those sort of went into the background, and this nervousness sort of set in. That seems to be sort of going away, while I would not say that has gone away completely, because if you see the movement today, fewer companies have lifted the Sensex today. Right. It hasn't been a very democratic lift. So I think markets are also sort of in that wait and watch mode. That nervousness may go away in a few days as positivity about the domestic market, the macroeconomic indicators, and also if you see, we are entering into the festive season, which is seen, and if you speak to companies, if you speak to industry, and if you speak to retailers, everyone is expecting a very buoyant festive season. So that is expected to provide a huge lift going forward to the companies and to the industrial sector. So that should have some impact on the markets, unless global factors totally turn very, very negative. जी, आज हम देखें तो एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया है और आईटीसी लगभग 1.5% बढ़ा। एफएमसीजी सेक्टर की हम बात करें तो जो एक फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, और आप आगे क्या एफएमसीजी शेयरों में क्या आप आगे और तेज़ी देखती हैं? देखिए, अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स अगर हम देखें, इनका जो परफॉर्मेंस है, जो डिमांड जिस तरह की देखी जा रही है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड देखी जा रही है। और आगे चूँकि फेस्टिव सीज़न आ रहा है, जैसा कि आपने कहा, तो ऐसा है कि ये जो डिमांड है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और स्ट्रेंथन होगी। तो ये जो कंपनीज़ हैं, इनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होने की संभावना है, और वो स्टॉक मार्केट्स में भी नज़र आएगा कुछ समय में। जी, फार्मा सेक्टर की हम बात करें तो आज अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ रही है, और कल ही जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने भारत में फार्मा मेडटेक के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर, इनोवेशन पर एक राष्ट्रीय नीति की भी शुरुआत की। ये जो नीति की शुरुआत की है, इसका उद्देश्य यही है कि भारत को फार्मा और मेडटेक उद्योग के लिए एक ग्लोबल हब, वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। कितना पोटेंशियल आप देखती हैं फार्मा क्षेत्र में आने वाले सालों में आप? विशाल जी, अगर आपको याद होगा, एक समय ऐसा था जब भारत जो है, जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो दवाइयों में जाते हैं, उनके लिए भारत जो है बहुत अग्रणी था उस क्षेत्र में। लेकिन धीमे धीमे जो है भारत थोड़ा पिछड़ गया। लेकिन जब कोविड आया, और कोविड के समय जब ये महसूस किया गया कि हम बहुत निर्भर हो गए हैं एक ही सोर्स पर, एक दूसरे देश पर, तो भारतीय जो कंपनीज़ हैं और ये जो फार्मा का क्षेत्र है, इसको किस तरह से और बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको किस तरह से और स्ट्रेंथन किया जाए, इसके लिए क्या उपाय किए जाएं। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी नीतियां लाई गई, फार्मा पार्क्स और इस तरह के भी जो हैं PLI के तहत भी इस तरह का किया जा रहा है, नीतियां बनाई जा रही हैं, ताकि हम सक्षम बन सकें इस क्षेत्र में, हमारी निर्भरता कम हो, और हमारी अपनी निर्भरता ही नहीं कम हो, हम दूसरे देशों को भी, जो छोटे देश हैं, जो नहीं इतना बड़ा उत्पादन कर सकते हैं, इतना फैसिलिटी नहीं स्थापित कर सकते हैं, हम उनको भी किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनको भी निर्यात कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था वैक्सीन के दौरान, जो वैक्सीन मैत्री का था, हमने बहुत सारे छोटे छोटे देशों को वैक्सीन्स दिए थे कोविड के। तो उसी तरह से निजी फार्मा क्षेत्र को किस तरह से दोबारा से स्थापित किया जा सके, और भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं, एक ग्लोबल सप्लायर के बतौर इस्टेब्लिश किया जा सके, ये नीति उसी दिशा में एक और कदम है।
So, while we're talking about the pharma sector, Deepshika, we also know that there is a commercial angle to it and there's a social angle to it. And health and providing good medical facilities and health and cheap drugs and medicines within India is a very, very critical factor for our development. How do you think our pharma sector has been navigating this so far, keeping both aspects in mind? So Gaurav, if you see, there's definitely a social angle to it, and I would say the government there has made very significant interventions. If you see the Ayushman Bharat scheme, if you see the Ayush Kendras, which are distributing medicines, in terms of policies also, there have been policy measures which make it mandatory for doctors to, prescribe, not branded medicine, but so all these measures are aimed at ensuring that consumers receive medication at affordable cost. The healthcare remains affordable in the country. So that framework is definitely there, and I think in terms of framework, there is a pharma control body which keeps a check on the pricing. So those measures are in place, I think, and that is how we've tried to sort of strike a balance while we've allowed the domestic pharma, private pharma companies to flourish. But we are also ensuring as a country in terms of policy interventions that, healthcare, medication, they remain affordable. So the Prime Minister has often spoken about South-South cooperation and South leadership, and here at a regional level, with a lot of developing countries wanting the same kind of drugs, the generic ones at cheaper costs, India can play a leadership role? Definitely, and we have seen, in fact, Indian pharma companies already are exporting to a number of these countries. They have established markets there. Of course, there is much more to do. And with these policies, we can not just become, self-reliant, but definitely we can emerge as a supplier of these medicines or any generics or branded drugs to the world. Right. जी, आईटी सेक्टर की बात करें तो हम पिछले कुछ तिमाहियों से देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर दबाव का सामना कर रहा है. क्या अब आने वाले समय में हम आईटी क्षेत्र के जो शेयर हैं उनमें हम कुछ सुधार देख सकते हैं? कुछ ऐसा आपको लगता है? विशाल जी, आईटी क्षेत्र अगर आप देखें तो उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है निर्यात का है, और वो निर्यात जिन इकोनॉमीज़ में होता है, जो एडवांस इकोनॉमीज़ हैं, अमेरिका है या यूरोप है, जिनको ये आईटी कंपनीज़ जो हैं सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पर अर्थव्यवस्था अभी भी स्थिर नहीं है. वहाँ पर अभी भी बहुत अनिश्चितता बनी हुई है. तो जब तक वहाँ पे अनिश्चितता कम नहीं होगी, इन कंपनीज़ के लिए भी अनिश्चितता थोड़ी बनी रहेगी. तो कुछ समय तक ये ओवरहैंग रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूएस में अगर फेड का अगर आप स्टेटमेंट देखें, अगर कुछ समय तक पॉज चल रहा है और अर्थव्यवस्था जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है और अर्थव्यवस्था भी ढर्रे पर आती है, रिसेशन में नहीं जाती है, तो इस क्षेत्र के लिए डेफिनेटिवली पॉजिटिव एक डेवलपमेंट होगा वो. जी, आपने इन्फ्लेशन की बात की. अगले महीने ही आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होनी है. उसमें क्या आपको लगता है कि अब क्या ये पॉज बना रहेगा इंटरेस्ट रेट्स में, या कुछ संभावना है फिर से ब्याज दरों में परिवर्तन की? विशाल जी, देखिए, दुनिया भर के अगर आप सेंट्रल बैंक्स को देखें तो अधिकांश जो है बहुत ही हॉकिश टोन में बात कर रहे हैं. तो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और हमारा सेंट्रल बैंक भी कोई रिस्क उस पर नहीं लेगा. हमने जैसा कि देखा कि कच्चे तेल के दाम जो हैं विश्व के बाज़ार में बढ़ रहे हैं. फेस्टिव सीज़न के आसपास भी हम देखते हैं जो खाद्य तेल हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं. तो रिज़र्व बैंक जो है इन सब फैक्टर्स को नज़र में रखे हुए है. दूसरा, बाकी विश्व में क्या हो रहा है उस पर भी नज़र रखे हुए है. तो ऐसा लगता है कि अभी यथास्थिति पॉज की ही स्थिति होगी. घटने की तो संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, बढ़ने की संभावना नहीं है.
So just doing a zoom out now at the overall, levels of stocks and their prices, and a month or so back there was when the market was really moving up, and of course it did stabilize and come down and correct itself. They were saying the Indian stocks are really overvalued. Do you think that overvaluation is settled? Well, I don't know, Goran, if you've seen the Nomura's report which came out today. So I don't think the investors are now sort of seeing India as really overvalued. I think India is seen as a very attractive market by everyone. And if you look at the indicators, whether you take high frequency indicators or whether you take the economic data that has been coming out, definitely India looks much more attractive from that angle. Wonderful. So we now move on to the next story, Deepshika. It's about the e-marketplace, the government e-marketplace, or GEM as we call it. So the government e-marketplace will launch the GEM Sahai 2.0 for sellers to provide easy access to loans for up to 10 lakh rupees. In a media briefing, the CEO of GEM, PK Singh, informed that the government is working to make the GEM portal more seamless to bring on board sellers from various categories. According to the Commerce and Industry Ministry, the loans will be dispersed in a hassle-free manner in 10 minutes, and more banks will be encouraged to join the initiative. GEM Sahai 2.0 is a mobile-based inclusive lending platform enabling sellers to avail loans on the acceptance of an order on the GEM platform. According to the ministry, GEM has disbursed loan amounts of around 21 crore rupees to sellers so far. It said 2,13,000 businesses are actively offering 36 lakh products on the GEM platform. The ministry said GEM is leveraging the latest technology to enable sellers from all over India to access the public procurement market, including initiatives like GEM outlet stores and the One District, One Product initiative. So before we move into the details, Deepshika, it would be good if you just gave us an understanding of how has this platform matured, because there were teething, there were hiccups, and there were initial issues of registration and, of resolving disputes, and how does one get more visibility, transparency. How has this platform matured so far? Like we've seen, and you gave the numbers, 2,13,000 businesses are registered. So definitely, and if you look at the volumes of transaction, it has gone up tremendously. Government departments are now actively sourcing from GEM, the sellers registered on the GEM portal, and more departments are sort of being pushed to sort of purchase or make their procurements through this portal. So I think those initial teething troubles which were there, those have definitely, those are a thing of past. I think the platform is very, very stable, and which is why now the government's topping it with, these kind of products wherein they can offer more facilities to the sellers on the platform, and also make it easier for them to do business. They also, if you look at this loan scheme which they have announced, this definitely helps a lot of the small sellers, because for working capital, once you get an order for working capital, you don't have to do the running about. You are already registered on the platform. Your details are already there with the platform, and now your working capital would be available to you just at the click of a button. So this definitely empowers them and helps them in a very effective way. Right. And I think also at one level, we've always, now of course we are predominantly services in terms of the money coming in, but an agrarian economy and taking agriculture to the next level, wanting younger people and the younger generation to step into also this line of work. And I think the digitization and the e-marketplace and things like that would be a great asset. Definitely. So we have to see this sort of enhances digitization. This brings transparency in the entire government procurement, which is such a huge plus. So the government department, all the talks of corruption in the past, files not getting cleared, payments not happening, payments getting delayed of sellers,
all those things can be done away with because everything is now there online. So the orders have to be processed, the payments have to be processed. So there are no, the corruptions definitely sort of removed. And also sellers are getting money on time, so they can look at expanding their businesses and do whatever. And plus, it is being topped with facilities like these, say working capital loans and so on. So definitely, I think this is the way forward. Yeah. In fact, you spoke of money on time, and I think for whether it's a medium scale or small scale, your turnaround time, getting your money on time is such a great strength to actually grow the business. You hit the nail, Gaurav. For small sellers particularly, they had to wait for like months together to get their money back for any supplies made. And they had no fund for, they had to rely on, different sources for funds. They had to pay interest for that just for working capital, and their money was stuck somewhere in the chain. So these things definitely make business easier, doing business easier for these people. Absolutely. कारोबारी सुगमता जेम पोर्टल के थ्रू। और अब हम बात करेंगे रुपए के प्रदर्शन की। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 83 रुपए 23 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 106.29 पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा जी, डॉलर इंडेक्स 106.29 पर पहुंचा। क्या संकेत देखती हैं आप वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए और खासतौर पर हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए डॉलर इंडेक्स की इतनी मजबूती के पीछे? देखिए, डॉलर की डिमांड, रुपी को आपको देखना पड़ेगा कि जो परफॉर्मेंस है उस पे डॉलर का जो मूवमेंट है वो रुपी से इंडिपेंडेंट है। तो जो यूएस अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो हो रहा है उसका असर डॉलर पर है। चूंकि वहाँ पर ब्याज दरें बढ़ रही हैं, डॉलर की खरीदारी हो रही है, डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए डॉलर की प्राइस जो है बढ़ रही है, उसका असर रुपए पर आ रहा है। तो इसको जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जो डॉलर की डिमांड अभी भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, उससे आपको लिंक करके देखना पड़ेगा। और इसीलिए हमने देखा है पिछले कुछ समय में रिजर्व बैंक जो है, जब एक स्तर से नीचे गिरता है रुपया, तो रिजर्व बैंक जो है इंटरवीन करता है मार्केट में, एक स्तर से ज़्यादा उसे गिरने नहीं देता है। अब रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। एशियाई शेयर बाजारों की बात करें तो सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स को छोड़कर आज बाकी एशियाई बाजारों में तेजी रही। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.8% का उछाल आया। जापान का निकेई और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों 0.2% के लाभ में रहे। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज हुई। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान मिला जुला रुख रहा। फ्रांस का कैक 40 0.1% की बढ़त में चल रहा था। समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स और लंदन का फुट्सी 100 दोनों 0.2% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। Look at the US markets now. The 3 major US indices ended more than 1% lower yesterday as 10-year Treasury yields held their multi-year highs. The Nasdaq Composite Index plunged 1.6%, the S&P 500 declined 1.5%, and the Dow Jones Industrial Index slipped 1.1%. Seeing the US market in the larger perspective and juxtapositioning it with FPI investment in India, and we're looking at in September FPIs have fallen, and the Fed is not clearly indicating that yes, they will decrease rates. No, they're saying we might just go ahead with increases. How does this, because here in India also we're seeing that demand is weakening a little, consumer demand, inflation is high. Of course, we're looking at good results in the festive season, but because oil prices, as you'd mentioned earlier, are going up, pressure on profit margins. How do you see this affecting the market? So if you look at the US markets, I think the nervousness which is there in US obviously stems from what the US Fed said in its recent statement. So the statement was very hawkish. Fed has clearly indicated that reducing inflation, bringing it within the target level remains its key focus. So which markets reading is probably the Fed
this pause is just a pause and there is a imminent hike coming in. So definitely if interest rates are to go up further, and if you look at the treasury yields are at multi-year high, and those definitely are a gauge of future rates. So definitely that nervousness seems to be feeding in that, if the Fed really goes for a sharp hike in some time, in a few months, it can tip the US economy into recession, because still now, the talk has been there'll be a soft landing. So maybe it may not be such a soft landing. So those factors will definitely have some kind of an impact on the inflows as also, because if the the yields, if the interest rates rise, definitely the inflows would get impacted to some extent. But I think if the Reserve Bank, the authorities are also keeping a close watch. So that would obviously, I think they would also respond if such a situation happens. Okay, so wait and watch, as you said earlier. Okay. Brent crude prices rose more than 1% today as markets focused on supply tightness heading into winter and a soft landing for the US economy. In intraday trade, Brent crude was trading at $95.20 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $91.92 per barrel when reports last came in. Oil prices rising, Deepshika, and the Indian economy linked to these prices. Are we on slippery ground? Well, I think this does sort of raise, this is a huge risk factor for the Indian economy, because definitely we are a large importer. We are largely import dependent on for oil. So this is definitely not a good sign for India. And people are already talking about oil hitting 100, and that is kind of a psychological benchmark for this is 1 century we don't want, right? Definitely, absolutely not. I think no one wants that. So I think government's also keeping a close watch, and if this balancing happens now, I think this is largely because two producers, Russia and Saudi Arabia, they've cut output, and this is the impact is clearly visible. But if the global economy, the cues are not very positive. If you look at China, if you look at US as well, so I think if there are indicators like that, maybe the prices will remain below 100, or unless there is a sharper cut coming in. So I guess it's definitely a wait and watch here, but I think wait and watch with concern for India. जी, अब नजर डाल लेते हैं सोने चांदी की कीमतों पर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने की वायदा कीमतों में 260 रुपए की गिरावट चल रही थी। समाचार तैयार किए जाने तक सोना 58,175 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 420 रुपए टूटकर 71,355 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना गिरावट के साथ $1,911 70 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा जी, बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि सोने की कीमतें में ये गिरावट का दौर जारी है। कहाँ हम देख रहे थे 62,000 तक पहुंचा था सोना कुछ महीने पहले, और अब ये 58,000 के आसपास आ गया है। किस तरफ जा रहा है सोना? खुशखबरी है विशाल जी कि किसी चीज़ का तो दाम कम हो रहा है। पर देखिए कि अगर डॉलर में बढ़ोतरी होती है तो उसका असर जो है वो सोने पर आएगा। और दूसरी जो बात है, जो फैक्टर है, जो सोने के दामों पर जिसका असर होता है, वो है हमारी डोमेस्टिक डिमांड। जो फेस्टिव डिमांड अब दिखाई देगी, उसका असर दिखाई देगा दामों पर। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है एक बहुत ही शॉर्ट टर्म वाला जो है ट्रेंड हो सकता है कि दाम इसके बाद और बढ़ें। Right. I think thank you so much, Deepshika, for giving us insights, valuable insights. And now, before we close, a reminder of the headlines. Key domestic markets end with marginal gains. Sensex finishes above 66,100. Nifty ends above 19,700 points. Gold trades at around 58,000 rupees per 10 grams for October contract at the MCX. And Brent crude prices rise more than 1% to trade at $95.20 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.